उदकग्राभ्यां पवित्राभ्याम् अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां मूलेन पुनराघारं दृढत्पूया पवित्रग्रन्थिं विस्रस्य अपस्पृष्ट्वा प्रागग्रान् दर्भानग्नो प्रहृत्य आज्ञं सुरभिमुद्रया मृदीकृत्य दर्भाष्टकैः विधाय चक्रमुद्रान् दर्शयेत् उष्णोदकेन सृक्स्रवौ प्रक्षाल्य दर्भपञ्चकृतकूर्चेन सृक्स्रवयोः मूलं मूलेन मध्यं मध्येन अग्रमग्रेण अस्त्रमन्त्रेण विशोध्य ॐ ब्रह्म सहस्रारहुं फट् समग्नो प्रहृत्य अष्टसुदिक्षु इन्द्रादीशाणान्तमभ्यर्चयेत् कुण्डमपि दहाधो मेघलायाम् ॐ कुमुदाय नमः ॐ कुमुदाक्षाय नमः ॐ पुण्डरीकाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ शङ्खुकर्णाय नमः ॐ सर्पनेत्राय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ सुप्रतिष्ठिताय नमः मध्यममेखलायाम् ॐ चण्डाय नमः ॐ प्रचण्डाय नमः ॐ भद्राय नमः ॐ सुभद्राय नमः ॐ जयाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ धात्रे नमः ॐ विधात्रे नमः ऊर्ध्वमेखलायाम् ॐ लमिन्द्राय नमः ॐ रमग्नये नमः क्रीडितये नमः ॐ वं वरुणाय नमः ॐ यं वायवे नमः ॐ संकुबेराय नमः ॐ ईशानाय नमः एते इन्द्रादिकर्णवस्त्रगन्धपुष्पसंयुक्ताः अग्नि अभिमुखाश्च ध्यातव्याः श्रुवेनाज्यमादाय होमवस्तु संसिच्य चिरुम् आज्येनाभिघार्य त्रीन् परिधेनधो मेघनापेक्षया किञ्चित् दीर्घान् श्रीधरनृसिंहः ग्रीवमन्त्रैः दक्षिणाद्युत्तरान्तमभ्यर्चयेत् ॐ श्रीधराय नमः ॐ नृसिंहाय नमः अग्निशानकोनयोः ॐ रमग्नये नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ अदितेनु मन्यस्व ॐ अनुमतेनु मन्यस्व ॐ सरस्वतेनु मन्यस्व ॐ देवसविधः प्रसुवा कुशकूर्चवेष्टितवामकरतले आज्यपात्रन्निधाय श्रुवेनाज्यमादाय निर्णितदेशमारभ्य ईशानदेशपर्यन्तं प्रजापतये स्वाहेति प्रथमाघारं हुत्वा ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतयैरं पुनः श्रुवेनाज्यमादाय वायव्यदेशमारभ्य आग्नेयदेशपर्यन्तम् इन्द्राय स्वाहेति द्वितीयाघारं हुत्वा ॐ इन्द्राय स्वाहा इन्द्रायेदम् अग्नेरुत्तरदेशे ॐ सोमाय स्वाहा सोमायेदं दक्षिणपूर्वदेशे ॐ अग्नये स्वाहा अग्नयैदम् अग्निमध्ये ॐ भूस्वाहा अग्नयैदम् ॐ भुवस्वाहा वायवेदम् ॐ सुवस्वाहा सूर्यायेदम् ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा प्रजापतयैदम् द्विशीर्षकं सप्तहस्तं त्रिपादं सप्तजिह्वकं वरदं शक्तिपाणं च बिभ्राणं सृक्स्रुवो तथा अभीदितं चर्मधरं वामे चाद्यधनङ्करे सहस्रादित्यसङ्काशं द्विशीर्षं सप्तहस्तकं सप्तजिह्वं त्रिनयनं त्रिपादं पाटलप्रभम् अञ्जलिं मुख्यहस्ताभ्यामितरैर्बाहुभिरमे शङ्खं चक्रं सृक्स्रुवो च तथानं शक्तिमायुधं कुण्डपद्मे स्थितं ध्यायेत् अग्निं स्वाहापतिं गुरुः ॐ सर्वा पूर्वो हि जातः स उगर्भे अन्तः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः प्राङ्मुखाग्ने ममाभिमुखो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव तदनग्ने प्रशमनार्थं सप्तजिह्वा होमं कुर्यात् काल्यां मूलमन्त्रेण समिद्भिः अष्टाक्षर्या मध्ये चतुर्वारं जुह्यात् ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा मनोजवायां प्रणवेन आज्यम् आग्नेये ॐ ॐ स्वाहा ॐ ॐ स्वाहा ॐ ॐ स्वाहा ॐ ॐ स्वाहा सुरोहितायां वासुदेवमन्त्रेण अन्नं वारुणे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 सुधूम्रायां शङ्करशनमन्त्रेण राजम् ॐ नमो भगवते शङ्करशनाय स्वाहा
ఓం నమో భగవతే శంకరజనాయ స్వాహ ఓం నమో భగవతే శంకరజనాయ స్వాహ ఓం నమో భగవతే స్ఫులింగిన్యాం ప్రద్యుమ్నమంత్రేణ తిలం ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ ఓం నమో భగవతే ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ ఓం నమో భగవతే ప్రద్యుమ్నాయ స్వాహ విశ్వరూపాయ అనిరుద్ధమంత్రేణ ముద్గం ఐశాన్యే ఓం నమో భగవతే అనిరుద్ధాయ స్వాహ 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 కరాళికాయాం పుంసూక్తేన మధుజ ఓం పూర్వదిగ్భాగే జుహుయాత్ ఓం సహస్రశీర్షः పురుషः సహస్రాక్షः సహస్రపాత్ సభోమిం విశ్వతో వృత్తా అత్యతిష్టద్దశాంగులగ్గు స్వాహా సహాకృచనాచార్యాధారాయ పద్మాంతం యోగవీఢం పరికల్ప్య ఓం భృంభ్రమాధారశక్త్యై స్వాహా ఓం భ్రూం కూర్మకాలాగ్నగే స్వాహా ఓం మహామనందాయ స్వాహా ఓం ధంధరణ్యై స్వాహా ఓం ధర్మాయ స్వాహా ఓం గిమ్యానాయ స్వాహా ఓం వైరాగ్యాయ స్వాహా ఓం ఐమైశ్వర్యాయ స్వాహా ఓం ధర్మాయ స్వాహా ఓం అజ్ఞానాయ స్వాహా ఓం వైరాగ్యాయ స్వాహా ఓం హం సదాశివాయ స్వాహా ఓం రం ఋగ్వేదాయ స్వాహా ఓం యజుర్వేదాయ స్వాహా ఓం సామవేదాయ స్వాహా ఓం అథర్వవేదాయ స్వాహా ఓం భం భౌతికాహంకారాయ స్వాహా ఓం వ్యోం ద్వితీయాహంకారాయ స్వాహా ఓం వైకారికాహంకారాయ స్వాహా ఓం ధం సత్వగుణాయ స్వాహా ఓం రం రజోగుణాయ స్వాహా ఓం తం తమోగుణాయ స్వాహా ఓం మహీతోగతేజమారుతవ్యోమాత్మనే ఓం భట్నమత్వాహ ఓం ఆస్తునరూపాక జీవాత్మనే స్వాహ ఓం రాముణ్యమండలాయ స్వాహ ఓం సాం సోమమండలాయ స్వాహ ఓం హాం సూర్యమండలాయ స్వాహ ఓం పం పద్మాయ స్వాహ ఓం కం బ్రహ్మణే స్వాహ ఓం విష్ణవే స్వాహ ఓం ఈమీశానాయ స్వాహ ఓం సనత్కుమారాయ స్వాహ ఓం సనకాయ స్వాహ योगपीठं भक्त्वा ओं गन्धमिदं घ्राण स्वाहा ओं पुष्पमिदं घ्राण स्वाहा ओं धूममिदं घ्राण ततः अग्निमध्यस्थयोगासने अष्टाक्षरविद्यया मूलबिम्बं यथा वर्तते तथा साकारं ध्यात्वा ॐ मंत्रन्यासं कुर्यात् ओं रां वों नाभो वों यं वों मेहने वों नां वों जङ्घयोः वों यं वों पादयोः वों 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 मूर्धनि वों नं वों नेत्रयोः ओं वों वों मुखे वों नां वों हृदये च वों क्रुद्धोल्काय हृदयाय नमः मोहोल्काय शिरसे स्वाहा ओं वीरोल्काय शिखाय शङ्कुल्काय कवते तेजोल्काय नेत्राभ्यां वो षड् ओं सहस्रोल्काय स्त्राजभट किरीटा कुण्डला वनमाला श्रीवत्स कौस्तुभा चक्र शंख पद्म गदा पादाग्रे गरुडमुद्रां च प्रदर्श्य अग्निस्थं भगवन्तं जिदन्तमन्त्रेण कीर्तयेत् जिदन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज षोडशोपचारान् कृतेन जुहुयात् ओं नमो नारायणाय अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा ओं त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् ओं नमो नारायणाय पाद्यमिदं गृहाण स्वाहा ओम आप पुनन्द पृथिवीं पृथिवी पुनन्द ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मभूता पुनातु माम् ओं नमो नारायणाय आचमनीयमिदं गृहाण स्वाहा ओं युं वस्त्राणि पीवसावसाधे जवोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाः अपादृतमृतानि विश्वाहृतेन मित्रा वरुणा सुजेधे नारायणाय वस्त्रयुग्ममिदं गृहाण स्वाहा ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नारायणाय ऊर्ध्वपुण्ड्रमिदं गृहाण स्वाहा ओं विष्णोरुडाटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोस्य प्रेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नमो नारायणाय ब्रह्मसूत्रमिदं गृहाण ओं गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानान्तामिहोपह्वये श्रियम् ओं नमो नारायणाय दिव्यश्रीचन्द्रमिदं गृहाण ओं स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः
किविभजक्षुराततम् ॐ नमो नारायणाय पुष्पमालामिमं गृहाण स्वाहा ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै स्वाडतपृथागजातमग्निं कविगुं सम्राजमतिझञ्जनानामासन्नापात्रं जनगन्तदेवाः ॐ नमो नारायणाय रूपमिमं गृहाण स्वाहा ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नन्निरृतिं मम पशोगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दशा ॐ नमो नारायणाय रूपमिमं गृहाण स्वाहा धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयमिदं गृहाण स्वाहा ॐ देवस्यत्वा सुविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यामादधे ॐ नमो नारायणाय आज्यनैवेद्यमिदं गृहाण स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमिदं गृहाण स्वाहा उत्तराभूषणमिदं गृहाण स्वाहा हस्तप्रक्षालनमिदं गृहाण स्वाहा पादप्रक्षालनमिदं गृहाण स्वाहा ताम्बूलमिदं गृहाण स्वाहा मात्रादानमिदं गृहाण स्वाहा मङ्गलनीराजनमिदं गृहाण स्वाहा सर्वोपचाराणि मां गृहाण स्वाहा नमस्तुभ्यं भगवते भक्ताभीष्टप्रदायिने अस्मिन्नग्नो सन्निधत्स्व पूजामपि गृहाण मे तथा गुण्डादिदेवतामन्त्रैः मूलमन्त्रैः मूर्तिमन्त्रैश्च यथा सम्भवम् आज्याहुतिर्होष्ये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ॐ नमो भगवते सङ्कर्षणाय स्वाहा ॐ नमो भगवते प्रद्युम्नाय स्वाहा ॐ नमो भगवते अनिरुद्धाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पुरुषाय स्वाहा ॐ नमो भगवते सत्याय स्वाहा ॐ नमो भगवते अच्युताय स्वाहा ॐ नमो भगवते अनन्ताय स्वाहा ॐ नमो नारायणाय स्वाहा
नवो नवो भवति भाजमानोऽन्हाङ्केतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः अग्निरिव शुचिर्भव आदित्या इव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव आयुरायुर्भव धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभगुं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिनि जगतां जङ्गमस्थावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतिमायुः कृतमिह बहुना यद्यदास्था पदं वः तत्तत्सद्यः समस्तं दिशतु स पुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ती शतमानं भवति शत ओङ्ग्युलहळन्द उत्तमन् पेर्पाडि नाङ्गल नम्बावै கொச்சாத்தி நீராடினாள் தேங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்குபரம் சன்னலோடு கயலுகளா ஒங்குவளை போதில் பரிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிழந்து சேர்த்தமுலை பத்தி வாங்க புடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வன் நிறைந்து சதமானம் பவதி சதாயுः புருஷः சதேந்திரிய ஆயுஷ்யேவேந்திரிய பிரதிஷ்டதி பகுவை பக்வஸ்வாயை பக்வஜா விகாயை बहुव्रीहयवायै बहुमागदिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदातपुरुषै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषायै राजास्तु सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन्राहत्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः त एवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति तेनं पुनः सुवन्ते राहत्याय देवसु राजा भवति ॐ
vote of thanks or message to all of us. बात देंगे स्वामी जी की थैंक्स देंगे We need the blessing of Swamiji, not the thanks. यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत बंधुओं, आज यहाँ श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता मूर्ति लोकार्पण कार्यक्रम में चलने वाले श्री लक्ष्मी नारायण सहस्र कुंडात्मक यज्ञ में भाग लेते हुए और यहाँ वेद पंडित जितने भी हैं उनका आशीर्वचन स्वीकार करके देश को और भी मजबूत बनाने के लिए और अपना भारतीय सेना को सबसे ताकत वाले बनाने के लिए यहाँ परम श्रद्धेय श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधारे हैं और यागशाला में अभी संकल्प लेकर वे हमको एक स्फूर्तिदायक रामानुजाचार्य स्वामी जी का इतिहास के बारे में मैसेज दिए हैं, अपना संदेश दिए हैं, जिनके लिए हम वी आर on behalf of our Sri Ramanujacharya Swami Sahasrabdi Mahotsav, we offer many, many Mangala Sasanams to him. पूज्य श्री आचार्य श्री श्री जी रविशंकर जी महोदय is here today out of his busiest schedule just because of his good heart. It is said, what is the need of searching for a thread to a well-known person? Is a Telugu saying, Jagamerigina Brahmanudiki Jandemela. The whole world knows about the great activities being conducted by Acharya Sri Sriji, who inspires millions and millions of people through his beautiful techniques of building the human values in the society. And the other day when we were speaking with him, and though he said that he is busy with some activity there, but he wanted to give a surprise to us. And he made it possible to attend here and participate in this beautiful evening and give a very, very wonderful and powerful message to all of us. And we offer our Mangala Sasanams to Pujya Sri Ravishankar Ji Mahoday. And today,
our Honorable Governor of Andhra Pradesh, in spite of his age and in spite of his schedule, he is very generous enough in sparing some time to receive the blessings of all the Vedic Pandits here so that he can do something to the state and something to the nation. He also participated in the yagam by receiving the sankalpa and also blessings from the Vedic scholars, for which our SRS team is offering their gratitude to you, Sriman Vishwabhushan Harichandanji, and we are very, very happy to have all these three great dignitaries. And especially when we saw Sriman Rajnath Singh ji in Delhi, and we were very much impressed by his hospitality there. He belongs to a royal family, and he still maintains that generosity of the rulers in doing good to the nation with good heart and with straightforwardness and sincerity, which is, very rare quality we find among the politicians. I'm sure that Rajnath Singh ji is not a politician, but he is a good person with good heart to do something so that a nation feels proud of her power. Ramanujacharya Swamiji Maharaj was a great leader of equality of those days, as our beloved Rajnath Singh ji mentioned. When we are seeing or studying or knowing about a person, we should not see today's situation and talk about that person. We have to travel to that time zone and understand the situations, and then we have to talk about. This is what all our dignitaries today did. In those days when the temple was the hub of the society, and when that system was not properly maintained, which results the society also to be improper, Ramanujacharya Swamiji thought that if the temple system is reformed, then the whole society will be reformed. And if the equality is observed by the temple, then the society automatically will be improved. This is what he thought 1,000 years before. When anybody talks about any kind of reformation, they will be probably excommunicated in those days. That's all the thing that they have to experience. And we saw so many people left their lives like that. In such a situation, Ramanujacharya Swami was able to bring all sorts of equality, as our Honorable Rajnath Singh rightly mentioned. Ramanujacharya Swami was a social reformer, and he was able to convince the rulers, and was able to convince the bureaucrats, and was able to convince the elite of the society. And of course, he was considered as the great Acharya
of those days. And the lineage of him is still alive in spite of so many onslaughts. And of course, there was so much disturbance during the time of Britishers. But now, during this time, when the country is under the able leadership of our Pritam Narendra Modi ji and our Bharat Sena is under the powerful guidance of Shriman Rajnath Singh ji. This is the right time of celebrating the 1,000-year celebration of Ramanujacharya Swami, to bring back the glory of our Bharat and our Sanatan Dharmam, to bring back the value of equality among all sections of the society, irrespective of their color, caste, or religion. Sriman Rajnath Singh ji rightly mentioned, we need not dominate each other, but we have to take care of our own practices, respecting the practices of others, which Ramanujacharya Swami did in those days. Today we need that. The need of this hour is that. So what would be the better time than his 1,000th year celebrations? And this year is very, very probably, this time is very, very powerful, we feel, because so many great things are happening in our country. रामानुजाचार्य स्वामी जी की मूर्ति का आविष्कार और काशी महादेव मंदिर का पुनरुत्थापन, राम जन्मभूमि का शिलान्यास के साथ मंदिर का उत्थापन, ये सब, all these things are happening because of the great leaders with sincere, devoted and committed hearts. We offer our prayers to the Lord to bless these leaders, to bless our country, and to bless all our dharmacharyas like Sri Sri ji, and see that the dharma is prevailed always on this land, and let the fragrance of this dharma spread all over the world. We are offering our Mangala Sasanams to Sriman Rajnath Singh ji for taking a very, very valuable time of him to attend this wonderful event and came exclusively for this function and received the blessings of all the Vedic scholars. Let our Bharat Sena be the most powerful one always under his able guidance. And our hearty Mangala Sasanams to Puja Sri Acharya Sri Sri ji Ravishankar ji for his able guidance to the youth especially. We are observing here how many are able to feel blessed to see him and to see his word, to listen to his words. Let his sweet words
and powerful practices always empower the youth of our Bharat, which will lead the world probably in the future for leading a very fair, generous and helping attitude. Swamiji, we are so grateful that you, in spite of your schedule, busiest schedule, arrived here exclusively to participate in this event and receive the blessings of the Vedic scholars, and also to spread the values for which Ramanuja Swami lived for 120 years. Many Mangala Sasranams, Swamiji, for your generosity. And also Pritam Vishwabhushan Harchandanji, though he is very busy, but he made it a point to participate in this wonderful event and receive the blessings from all the Vedic scholars to lead the state and thus the nation for a better future. And we offer our Mangala Sasanams to you for good and strong health, so that you will be always able to guide the rulers. And on behalf of our Sri Ramanuja Sahasrabdi Samaroh, we offer our Mangala Sasanams to all the local leaders also, our KCR and all others. They are very supportive in all the activities here, in making wonderful infrastructure so that the guests, अतिथि जो भी यहाँ पर पधारते हैं, उन लोगों को अच्छी तरह सुविधा होनी चाहिए, और they should feel very joyful tour here and receive the blessings, for which we do everything. That is the decision they have taken and made wonderful arrangements. And we are offering our Mangala Sasanams to all our leaders also here, headed by Sriman Keshiarji, and our Mangala Sasanams to all the devotees who are participating in this event. Many Mangala Sasanams to you, Sriman Rajnath Singh ji, Sriman Acharya Ravshankar ji and Harichandan ji. अब हम यहाँ से एक छोटा सा प्रदर्शन रामानुजाचार्य स्वामी जी का जीवन पे, वो आप उसका दर्शन भी करके और थोड़ा और तकलीफ लेकर और बाद में आगे का कार्यक्रम लिए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। Jai Sriman Narayana. Thank you, Sri Chinnajaya Swamiji, for the message. And this is yet another day to be marked in history with having the dignitaries share the same message to us.